हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2S क्लासेस। आज हम +2 क्लास के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। ऑन दिस चैप्टर लेक्चर 3 हैज़ बीन डन। टुडे इज लेक्चर नंबर 4 एंड एक्सरसाइज 4.2, others 4.1 and other things we have done in the determinant. Okay, types of determinants and other values of determinant, properties, remarks and area of the triangle also told if vertices are given. So in this lecture today we have to do from NCERT book exercise 4.2 question number 1 to 4. Okay, area of triangle is equal to half determinant x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 determinant half of this. This is the area, and remark I told कि area always positive. If this solution value of this determinant is negative, then area write positive always. And if any area is given of the triangle and any vertex is coordinate you have to find, then area put one time positive first case and second case one time negative. So you have to use that to find the value of unknown coordinate. Okay, and always you think that area is positive. Now one remark also I told if any 3 points are collinear points and you want to prove, you want to show that these 3 points given are collinear, prove it. So you can prove that by the area of triangle formula, put equal to 0. Why? Because if 3 collinear points हैं तो वो कोई भी ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। ट्रायंगल कैसे बनेगी जब कोलिनियर है, तीनों ही वर्टिसेस एक लाइन में रहे, तो ट्रायंगल नहीं बनी तो रीजन ख़त्म हो गया, ट्रायंगल का रीजन ख़त्म हो गया इनसाइड, तो दैट्स वाई एरिया 0, तो मिनिमम एरिया 0. ओके, और एरिया ऑलवेज पॉजिटिव. क्लियर? सो इफ़ कोलिनियर पॉइंट्स हैं 3 तो एरिया इक्वल टू 0. इफ़ एनीवेयर area you have to find any unknown coordinate of any point and saying that these are 3 collinear points हैं, तो then put area equal to 0 and solve. Okay, then that coordinate will come. So like these questions are there today in this exercise. Okay, 4.2. First question, coordinate given, simple application type which I told in previous video also. Okay, one example. Now you can do by the formula. Okay, do that. Use formula. Solution of the first part, coordinates given. So x1 y1 x2 y2 x3 y3, these are the coordinates. So you can say area of triangle is equal to half determinant x1 x2 x3 कॉलम में 1 x2 6 x3 4 y1 0 y2 0 y3 3, then 1 1 1. This is the formula of the determinant. This I told this in last lectures also. Okay, we expand and proved this formula like that. Okay, now expand it. So half expand along any one row or any one column, so where maximum zeros, I told this remark we should expand along which maximum zeros are there, because easy to evaluate. And we know this is the property for any determinant, if you want to expand any one row or any one column, the output will be the same always. So always this remark, this property, any row or any column, any one row or any one column you can expand. But one mark, easy to make convenient calculation that where zeros are maximum. Along that we should expand to make easy. Okay, so here this is the column 2.
तो कॉलम 2 हैविंग मैक्सिमम zeros, तो along C2 we are expanding, तो we can write along C2, ठीक है, expand along C2. तो what is that? First element 0 into it is one row second column, तो -1 odd, sum is odd, and remaining days after cancelling the column and the row, the 6 1 4 1 into 6 1 4 1, this determinant. Okay, second element again 0, and this is A22. Okay, then plus 0 into something will be 0. Okay, no need to do. Then after that third element plus 3 into it is the A32. This element is A32, third row and second column element is 3. So means sum is odd, 2 plus 3 5, then multiply by -1. Okay, if sum is odd of ith jth element into sum of ith jth, if odd then multiply -1, if even then 1. I told many times expansion of any determinant, ठीक है, clear. And into remaining, यानी along this column and row cancel, column and row cancel, तो 1 1 6 1, determinant 1 1 6 1, this expand, ठीक है, this. Now simplify forward, then this will be half bracket solve, 0 into something 0, okay, plus 0 into something 0, plus third 3 into -1 -3. Okay beta, 3 into -1 -3, then put -3 into expand this 1 1 6 1. So along first row I am expanding 1 into remaining element 1, and it is A11 element, so multiply by +1 because sum of ij is even, yani 1 plus 1 2, so that's why this element A11, first element first row first column, so I1 J1. Be careful always, I am repeating, okay beta. Then 1 into 1 into remaining element again 1, okay, plus, ठीक है बेटा, plus 1 again element, but it is ith jth odd because it is first row and second column, so I is 1, j is 2, 1 plus 2 3, 3 is odd, so multiply -1, and remaining after cancelling the along this column and the row, first row and second column, can 6 left, so into 6. Okay beta, then this will be equal half 0 plus 0 finish, then -3 into this bracket, so this solve कर लो, -6 और it is 1 1 -6 -5, तो -3 into -5, clear. 6 1 जा 6 -6, and it is 1 into 1 into 1 1 1 -6 -5, then it is half 15, half of -15, and area always positive, so determinant of negative, then half into 15, area positive always, ठीक है, then 15/2, 15/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है बेटा,
It is the area, square unit. Done. So like the second part also we can do similar. Okay. Now third part also is there. Third I am doing. This you can do. Second part you can do similar. Okay. Now third part, see in your book. Okay. What is? You will get the practice. You will get the many things to remember when expanding along any road and along any column. Ith, jth sum is important of that element, multiply by, if sum is even, multiply by 1. If sum of ith, jth is odd, multiply by -1 to that element. Okay. Now next question, next part we can say -2 -3, third part. Okay. -2 -3, comma 3 comma 2, comma -1 comma -8, these 3 points are the vertices of a triangle in third part. So area we have to find. So similar solution, what will be? Half area of triangle is equal half determinant using this formula x1 x2 x3, first column x1 x2 x3, -2 3 -1, -2 3 -1. Use these value. Okay. y1 y2 y3, y1 is -3, y2 is 2, y3 -8. Okay. And then 1 1 1. This determinant, half value of this determinant along any one row or column, along first row, along R1. ठीक है. expand along R1. ठीक है बेटा, along R1. तो R1 फर्स्ट एलिमेंट -2 बेटा into 1 into remaining after cancelling one row and one column. तो 2 1 -8 1, 2 1 -8 1. दिस डिटर्मिनेंट 2 by 2 डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे इसको. ठीक है बेटा. प्लस सेकेंड एलिमेंट -3, ith jth odd -1 into determinant remaining after cancelling the row and column along this element. तो column second and first row cancel. तो then 3 1 -1 1. This determinant, second element done. Then third element plus third element 1. It is 3 1, a 3 1. तो 3 I j 1. तो sum is even 3 plus 1, so multiply by 1, then same, then I am not writing, then along this column and row cancel 3 2 -1 -8, 3 2 -1 -8.
8. Okay, now simplify. This implies half bracket -2 into 1 -2 into this. एक्सपेंड कर लो इसको, डायरेक्ट करूँगा मैं एक्सपेंड, ठीक है बेटा. आई विल डू डायरेक्ट दिस. 2 into, understand, 2 into 1 because ith sum is even 1 plus 1 and into remaining element 1. तो 2 into 1 into 1 तो 2, ठीक है बेटा. तो -2 into 2, ओके बेटा. 2 and then plus 1 into -1 plus 1 into -1. तो -1 into remaining element -8 after cancelling column and row. This is the expansion of 2 1 -8, this to this, ठीक है बेटा. -2 multiply with this, okay. Now after that plus second -3 into -1, then 3 into expand of this 3 into 1 into 1, then 3 I am writing, and then 1 into -1, then -1 I am writing, and into again cancelling, then -1, ठीक है बेटा. This, okay. Then next plus 1 into this, to expand this, तो 1 into this means 3 into 1 into -8, 3 8 जा -24, डायरेक्ट आई रिटर्न, ठीक है. एंड प्लस 2 into -1, तो -2 into -1 रिमेनिंग एलिमेंट, ठीक है बेटा. दिस देन नाउ सिंप्लीफाई. बी केयरफुल. हाफ फ्रॉम द होल. First this inside and into -2. Inside is -1 into -8 plus 8 plus 8. 2 plus 8 10. तो -2 into 10 -2 into 10 -20. Now this 3 into -1 into -1 plus 1. तो 3 plus 1 4. 4 3 जा 12 plus 12. Now this -1 into -2 plus 2 -24 plus 2 -22. Be careful. Now simplify. -20 -22 plus 12, तो माइनस के 42 -42 plus 12 -42 plus 12 यानी 30. ओके, -30, तो हाफ -30. ओके, सो एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, देन 30/2 बिकॉज पॉजिटिव, एरिया पॉजिटिव. ओके, देन इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट. ठीक है बेटा, क्लियर, एक्सपेंशन क्लियर. तो लाइक दिस इवेल्युएट एनी डिटर्मिनेंट, वेरी सिंपल टू फाइंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द NCERT book. Okay, question number 2 we have to do okay beta. Now question number 2 is, see in the NCERT book, show that points are collinear. आ गया क्वेश्चन वही, show that following points are collinear. तो मीन्स एरिया 0 शो करना है. We have to show area 0, then hence proved these are collinear. Now question number 2.
show that following points are collinear. Question 2, so that points A comma B plus C, important question, point B is B comma C plus A, comma C point C comma A plus B. Are collinear. ये प्रूव करना है, दीज आर कोलिनियर. ठीक है बेटा. तो हाउ कैन प्रूव कोलिनियर? आई टोल्ड के एरिया इफ जीरो, दिस इज प्रॉपर्टी, एरिया इफ जीरो देन पॉइंट्स आर कोलिनियर. ठीक है. क्यों? क्योंकि जब एरिया जीरो हो गया तो रीजन खत्म हो गया, फिनिश द रीजन इनसाइड द ट्रायंगल. तो ट्रायंगल धीरे 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 खत्म होकर क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन बन गई. जीरो एरिया एंड स्ट्रेट लाइन बन गई, देन कोलिनियर हो गया तीनों पॉइंट. थर्ड पॉइंट भी धीरे धीरे उस पर ही आ गया. डन. ठीक है बेटा. तो रिमेंबर दिस एंड व्हाई आई टोल्ड यू. सो यू हैव टू प्रूव for collinear area of triangle equal to 0 because so. ठीक है बेटा. कोलिनियर हमें जीरो प्रूव करना है. क्या कहा इसने? प्रूव करो कोलिनियर, तो एरिया जीरो प्रूव करना है. टू प्रूव कोलिनियर, सो एरिया इक्वल टू जीरो. टू प्रूव. मतलब ये हमें प्रूव करना है. ठीक है. तो एरिया फाइंड करो. सो हाफ डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 a b c. ओके. y1 b प्लस c, c प्लस a प्लस b. 1 1 1. This determinant. So this determinant we are finding. Okay. Half. Expand it. Okay. How can expand? Along, I am expanding along C3. This along C3 I am expanding 1 into this cancel, B C plus A, B C plus A, C A plus B. Along this one column and the row cancel, left this B, this. Okay. Plus second element 1, it is, check करो ये और नहीं था even, it is था
4. Sum of I S J H 4 of this one. First one, it is row 1 I1 J 3. So 3 plus 1 4 even. That's why I multiply 1 into 1 that. Okay. Now this one is the second row and third column. So odd sum 2 plus 3 odd. So multiply minus 1. So element 1 into multiply minus 1. Okay, and into along this row and column and row cancel. So A B plus C, and this C A plus B. This, okay. Next, plus third element also 1, and this element is A 3 3. It means column also 3, row also 3 of this element, last element. So then 3 plus 3 is 6, 6 is even, so into 1, no need. Okay, then into expand along this column and row cancel. A B plus C, and B C plus A. This. Now what left area, हाफ तो हमारा बाहर है ही है, पूरा ब्रैकेट लगा दो, सॉल्व करो, एक्सपेंड करो, 1 बाहर है, 1 इंटू दैट सेम, तो मीन b इंटू 1 इंटू रिमेनिंग एलिमेंट a प्लस बी, b इंटू a प्लस बी, मल्टीप्लाई कर दो, b इंटू a प्लस बी, ba प्लस बी स्क्वेयर, this, okay, plus second element, and second element is माइनस 1 से मल्टीप्लाई होनी है, दैट्स वाई माइनस कर देता हूँ मैं, ठीक है बेटा, c प्लस ए, माइनस से एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, c प्लस ए, माइनस दे c प्लस ए इंटू रिमेनिंग कैंसलिंग, देन c इंटू c. See this, done, expansion of this done. Next element minus 1 into 1 minus 1, ठीक है बेटा, minus 1 into expand a into this cancel, and it is again 1 1, तो again only 1 से multiply, then a square plus ab, a square plus ए बी, ठीक है बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है बेटा. आफ्टर दैट बी प्लस सी एलिमेंट अगेन माइनस होगा, तो माइनस बी प्लस सी, ith jth ऑफ दिस एलिमेंट, बिकॉज दिस इज a1 2, 1 plus 2 3, so odd, so multiply minus 1, तो माइनस दिस, ठीक है बेटा, and into remaining element c into c, okay, then plus third element 1 into this, expand किया इसको 1 into, then a into remaining element ac plus a square, okay, clear, ac plus a square. Now second element minus b plus c minus b plus c into b, this here, and then last bracket, okay. Now simplify this, this is half out, full bracket, then ba plus b square minus c square ba plus b square minus c square and minus AC, क्लियर. दैन माइनस 1 से साइन चेंज होंगे, ठीक है बेटा, दैन माइनस ए स्क्वायर
and minus AB. Okay, and then this minus into this minus प्लस हो गया, ठीक है बेटा, -1 into this minus plus C into that, तो BC plus BC plus C square. Okay, now this C here multiply by here only nothing 1, तो as it is plus AC plus A square and then minus B square minus B square and minus BC. Okay, now plus BC minus BC. Okay, minus B square plus B square. Okay, minus A square plus A square plus AC minus AC. Okay, then plus C square minus C square. Okay, plus AB minus AB. So all term cancel out, then 0. So half, this implies half into 0 is equal to 0. Hence points A, B, C are collinear. ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। आर प्रॉपर्टी है या हमने प्रूव कर दिया, 0 एरिया 0 आर कोलिनियर। हैंस प्रूव्ड, ठीक है बेटा, डन। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 3. This question was also important. ठीक है बेटा, it is very important because here expand and prove that area is equal to 0. Hence these are collinear points. Now next question is 3. In NCERT book, question number 3. What is that? Find the value of K. Question 3. Find K. ठीक है बेटा, वही as I told you, if area of triangle is 4 square unit, if area of triangle is, if area of triangle is equal to 4 unit. Okay beta, 4 square unit. I told you that if area given, find unknown coordinate, that is here K. तो कहाँ है ये K? इनमें किसी एक कोऑर्डिनेट पर है, किसी एक पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, एनी वन ऑफ these 6 anywhere K given, then we can find that. Okay, तो here what, first part second part. तो first part K, 0, ठीक है बेटा, and vertices are, and vertices given. Okay, vertices are, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट में क्या दिया है, K, 0, x1 is K, y1 is 0, second point 4, 0, x2 is 4, y2 again 0, and third point 0, and x3 0, and y3 is 2. These points given. Okay, so solution, what, area of triangle
इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 गिवन। ठीक है बेटा, आई टोल्ड यू, ओके, व्हाट आई टोल्ड कि बोथ केस you have to take, one time positive, one time negative. Now area we are going to find half, ठीक है बेटा, हाफ इसको x1 डायरेक्ट आई एम पुटिंग डिटर्मिनेंट नहीं बना मैंने, x1, ठीक है बेटा। चलो एक बार डिटर्मिनेंट बना दो तो क्या होगा यहाँ, डिटर्मिनेंट x1 इज k, y1 इज 4, नहीं x2 इज 4, x1, x2, x3 इज 0, देन y1 इज 0 बेटा, y2 is again 0 and y3 is 2, okay, then 1 1 1, easy to expand along C2 because maximum zeros are present in column 2. I told कि where maximum zeros along that we should expand to make easy calculation, otherwise तो you can expand any one row or any one column, same result we know, तो 0 into something easy हो जाता है, then okay, तो expanding along C2, clear, हाफ C2, तो C2 यहाँ लिख देते हैं along C2, along C2, ठीक है, along C2 फर्स्ट एलिमेंट 0 into something will be 0 plus 0 into something will be 0 plus third element 2, this is the third row second column element, third row and second column, so it is 3 plus 2 ith jth sum 5, then it is 5 is odd, then multiply minus 1, so 2 into minus 1, ठीक है बेटा, and remaining after cancelling along this element row and column, ठीक है बेटा, this third row and second column cancel, then K141, तो डिटर्मिनेंट K141 this and this bracket, ठीक है, डन, then is equal to this is equal to plus minus 4, so this also equal to plus minus 4, okay, now this 2 will go and multiply, 2 4 जा 8, तो is equal to plus minus 8, ठीक है, यहाँ क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, ठीक है बेटा, तो 0 plus 2 into minus 1, then minus 2 only, minus 2 into expand k into 1 into 1, then k, ठीक है बेटा, प्लस 1 into minus 1, तो minus 1 into 4, ठीक है, रिमेनिंग एलिमेंट कैंसिलिंग आफ्टर दैट मैनी टाइम्स डन, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, माइनस 2 एक्सपेंड किया दिस, ठीक है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, ठीक है, डन, क्लियर दिस, ओके, नाउ सिंप्लीफाई, वन टाइम पॉजिटिव वन टाइम नेगेटिव, केस फर्स्ट पॉजिटिव 8, तो देन ये सॉल्व किया k माइनस 4, अंडरस्टैंड, तो माइनस 2k प्लस 8, माइनस 2k माइनस प्लस 8, माइनस 2k प्लस 8, माइनस 2k प्लस 8 इज इक्वल टू 8,
वन टाइम, ठीक है बेटा, पॉजिटिव लिया, केस फर्स्ट, देन -2k इज इक्वल टू 8 - 8 0, देन दिस implies k equal to 0 divided by -2 0, one value. Second case, what is second case? -2k plus 8 equal to -8, okay, negative, then -8 and -8 -16 हो गया, -2k, then this implies minus divided by -2, then k is equal to +8. So these two values of k equal to 0 and k equal to 8. So answer, find k, means both answer, k equal to 0, 8 answer. Done. Like this you can do the other part of this third, okay, other part also in your NCERT book, second part you can do similarly, okay. Now question number 4, find equation of line joining 1 to, question number 4. ओके, लाइन का मीनिंग क्या हो गया? लाइन पर 3 पॉइंट हैं, ठीक है, तो देन एरिया इक्वल टू 0 टू मेक द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ओके. डिटर्मिनेंट इज ए फंक्शन, ओके, डिटर्मिनेंट इज ए फंक्शन इन स्क्वायर मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ए इक्वल, दैन यहाँ क्या हो गया, इसने कहा फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन. फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, अंडरस्टैंड, इक्वेशन ऑफ लाइन joining 1 2 and 3 6, line joining 1 2 and 3 6, okay, using determinants, using determinant, okay. This is the question. Then solution, let third point, let one more point x, y lies on this line, ठीक है बेटा. तो 3 पॉइंट हो गया बेटा, 2 पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये हो गया, क्लियर. तो कहीं ले लो आप, कोई सा भी, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है बेटा. तो आई एम टेकिंग दिस 2 एंड दिस थर्ड, x3y3 ले रहा हूँ, कोई ले लो. तो क्या होगा, ये कोलिनियर हो गया एक लाइन पर. सॉल्यूशन, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल equal to 0 because these are collinear. These points are
कोलिनियर। ठीक है बेटा, इसलिए एरिया 0। देन सो हाफ डिटर्मिनेंट कौन सी बनेगी? 1 3x x1 x2 x3। ठीक है बेटा, y1 2 y2 6 y2 6y 2 6 y 1 1 1। This determinant is equal to 0. This implies half value of this determinant. Okay, 1 into 1 into determinant remaining 1 column 1 row can 6 1 y1 6 1 y1। एक बार इसको लिख दे। ठीक है बेटा, प्लस 2 इंटू -1 तो -2 लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, प्लस 2 इंटू -1 बिकॉज इट इज़ ith jth 3, दैट्स वाई -1 से मल्टीप्लाई। तो प्लस 2 इंटू -1 -2 इंटू रिमेनिंग आफ्टर कैंसिलिंग द कॉलम एंड रो। तो सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो कैंसिल 3 1 x1 plus third element 1, it is A13 first row third column element, this one. So sum is even, then multiply 1, no need, so into determinant remaining after cancelling along this column and along this row 3 6 xy 3 6 x y। ठीक है बेटा, क्लियर? कौन सा एलिमेंट है? नहीं है दिस अलोंग दिस थर्ड एलिमेंट, दिस कैंसिल बेटा, दिस 1 2 3 6, इट इज रॉन्ग। 1 2 3 6 this third element, this element third element, and it is A33, that's why into positive because 6 3 plus 3 6 ith jth। ठीक है, but this cancel and this column cancel 1 2 3 6 1 2 3 6। okay, now solve this। ठीक है बेटा, this equal 0 बिकॉज दीज कोलिनियर। तो ये इक्वेशन आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये 2 इंटू 0 0 हो गया। ठीक है, तो एक्सपेंड किया 6 इंटू 1 6। ठीक है बेटा, एंड 1 इंटू -1 इंटू वाई -y, तो 6 इंटू 1 इंटू -1 इंटू वाई, तो -y, तो 6 -y। ठीक है बेटा, क्लियर? नाउ हियर देख, 3 इंटू 1 3 -1 इंटू एक्स -x डायरेक्ट करना शुरू कर दो अब। ठीक है बेटा, 3 इंटू 1 3 एंड -1 इंटू एक्स -x, तो 3 -x, तो -2 इंटू 3 -x। ठीक है बेटा, प्लस 1 इंटू 1 इंटू 6 ठीक है, एंड -2 इंटू 3 -6। ठीक है बेटा, क्लियर? दिस एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ सिंप्लीफाई, 0 इंटू 2 0। ठीक है बेटा, नाउ सिंप्लीफाई
inside multiply minus 2 3 are 6 minus 6 plus 6 6 minus 6 minus y and minus plus 2x and plus 0 this. Clear बेटा? डन, ऑल 3 डन. ठीक है, चेक कर लो. ये दूसरा हो गया था, ये तीसरा हो गया. ठीक है बेटा. इज इक्वल टू 0. तो दिस इम्प्लाइज व्हाट इज दिस? 6 minus 6 plus 6 कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू वाई. ओके बेटा, 2x minus y इक्वल टू 0. 2x minus y equal 0. This is the equation of the line. ठीक है बेटा, equation of line. Answer, it is equation of line. It is equation of line. Done. ठीक है बेटा, hands proved. So like this question you can do other part also here, 2 points, other 2 points. So like this you can do up to question 4 and you take interest. Okay, remember expansion of any determinant, how we are expanding. ठीक है, many times we have done. Okay, watch and subscribe the channel and send the video to the others. Okay, thank you.